Hey guys, welcome back to Design by Misha. Interior design is extremely beneficial when it comes to creating a healthy living and working environment. और these benefits are much more than interior aesthetics. और जब हम incorporate करते हैं nature into our indoor environment, we call it biophilic design. Biophilic design आज के time में is one of the most valuable interior design trend. तो बेसिकली होता क्या है इस डिज़ाइन में, वी ब्रिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड इनटू बिल्ड स्पेसेस, जैसे कि यूज़ ऑफ वाटर ले लीजिए या फिर ग्रीनरी एंड नेचुरल लाइट. इसके साथ साथ एलिमेंट्स लाइक वुड एंड स्टोन का यूज़ किया जाता है टू क्रिएट बायोफिलिक इंटीरियर्स. बायोफिलिक का मतलब ही लव ऑफ नेचर होता है. सो वी क्रिएट अ कामिंग स्पेस विद अ विजुअल कनेक्शन विद नेचर while improving well-being, health and productivity. और जब बात आती है बायोफिलिक डिज़ाइन को इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं आप in ways that offer tangible interaction with the earth, water and fire elements. तो सबसे पहले तो घर में जितना हो सके पॉसिबल नेचुरल लाइट घर में आने दीजिएगा, बिकॉज अगर आपकी वेल प्लान्ड विंडोज होंगी एंड यू विल यूज लाइट वेट कर्टन्स, वो मैक्सिमाइज करेंगे एक्सपोजर टू नेचुरल लाइट इन योर स्पेस. Second option मैं recommend करूँगी create an indoor living wall. If you design nicely, then you can turn into a beautiful lush statement wall. Remember to consider a drip irrigation system for regular watering. The earthen brick in the living room blends beautifully with the vertical garden alongside. Third idea is to decorate with sustainable organic materials like jute carpets or rubber wood furniture या bamboo blinds. हमारा main motto है to build a bridge between the indoors and the outdoors. When we invite nature into our home with indoor plants in every nook and corner, you will feel the difference. Plants are also known to regulate temperatures and remove pollutants from indoor air. तो जितना ज़्यादा plants आप ऐड करेंगे, the more lovely your home will look. Fourth idea is कि आप ऐड कर सकते हैं लिविंग रूम के स्टेटमेंट वॉल पे लीफी प्रिंट्स या वॉलपेपर with delicate floral prints that can help mimic nature within your home. And trust me, it will give a refreshing look in your space. और अगर if you don't want to go bold with the entire botanical wall, photographs and posters will be a second alternative. Fifth option is to incorporate elements of nature in the fabrics around your home. चाहे फिर वो bed linen हो या pillows, cushions, sofa upholsteries और window drapes. कलर पैलेट में आप नेचर इंस्पायर्ड शेड्स ऑफ अर्दी ब्राउन्स, फॉरेस्ट ग्रीन एंड डेलिकेट फ्लोरल पेस्टल्स को यूज कर सकते हैं. Sixth option is to include water feature. Water की जो sound होती है ना, that creates a smoothing atmosphere for our mind. And the sound of flowing water helps with the deep relaxation of our body and mind, taking you to your own happy place. और अगर आपके घर में गार्डन हो तो मेक अ स्मॉल पॉन्ड, देन यू कुड एंजॉय द साउंड ऑफ वाटर ऑल डे लॉन्ग. और अगर जगह का इशू हो तो गेटिंग अ स्मॉल फाउंटेन इनडोर इज अनदर ग्रेट वे ऑफ एक्सेसिंग दो स्मूथनिंग साउंड्स ऑफ वाटर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट एड अ पीस ऑफ आर्ट. जैसे कि कहा जाता है, आर्ट स्पीक्स वेयर वर्ड्स आर अनेबल टू एक्सप्लेन. तो बस यूज कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट वाइल्ड फ्लावर्स, forest, a picture of a rising sun, singing birds, framed living wall या फिर anything that reminds you on your treasured moments spent in nature. You just have to fill your home with a sense of creative well-being and pure happiness by celebrating elements of nature in your home. बस याद रखिएगा to use the right colors, textures and patterns.
और ये जितने भी आइडिया मैंने आपको शेयर किए, all these are easy to incorporate into almost any home without the need of any major remodeling. Interior design has definitely changed since the inception of biophilic designs. The sick building syndrome have been reduced and comfort have been enhanced. इन सब आइडिया में से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. That's all for now. I'll see you in another video. Till then, take care and goodbye.